हमें पढ़ने हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, मगर हमें क्या है, हमें पढ़नी है दी इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर a body moving with velocity uniform acceleration A along a straight line. ठीक है. Let O is the origin for measurement. This is O. This is the origin for the measurement. ठीक है. Let x1, x2 be the displacements at time t1 and t2. This is यहाँ से यहाँ तक है x1 at time t1. This is x2 at time t2. Let v1 and v2 be the velocities at t1 and t2. So we have a body having uniform acceleration with origin O for measurement. X1 is the displacement at time t1, x2 is the displacement at time t2, v1 is the velocity at time t1 and v2 is the velocity at time t2. Therefore, first equation जो है मैं first इसको बोलते हैं velocity time relation. ठीक है. First equation is velocity time relation. देखो, we know एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, ये होता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. दिस इक्वेशन फर्स्ट विच इंप्लाइज v2 माइनस v1, ये किसके बराबर आएगा, a इंटू t2 माइनस t1, और v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1. ठीक है. लेट v1 इज इनिशियल वेलोसिटी, लेट इट इज इक्वल टू u. ठीक है. v2 इज द फाइनल वेलोसिटी, लेट इट इज इक्वल टू v, and let t2 minus t1 it is equal to t. Now putting these value in equation this first, second sorry, we can write v2 के बदले हम लिखेंगे v is equal to v1 के बदले लिखेंगे u प्लस a अपना t2 माइनस t1 के बदले लिखेंगे हम t, और v इज इक्वल टू u प्लस a t. This is the velocity time equation of uniformly accelerated motion. Now in calculus method we can also derive this. We know that a जो है acceleration, it is always equal to d rate of change of velocity. ठीक है. और I can write dv is equal to a dt. This is equation first. ठीक है. Now integrating this equation first on both sides, integration of dv is equal to integration of a dt, और integration of dv is equal to a common निकालो, this is dt. Integration of dv 1 dv it is equal to v. a अपना integration of this t it is equal to dt, it is equal to t. So I can write it as a, ये बन जाएगा हमें t प्लस t प्लस k. ठीक है. नाउ इफ v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू k at time t is equal to 0, therefore v
is equal to u plus a t. This is u, k is equal to u, and this is at, v is equal to u plus at. This is the calculus method for deriving the velocity time equation of uniformly accelerated motion.